Yes, organizers, please. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. I am Jayanti Jain, presenting today's Saturday class along with my co-presentators Dipen Singh Shaktawat and Vijay Pratap Singh. The topic around which our today's presentation revolves is the Banning of Unregulated Deposit Scheme Act, which came into force in the year 2019. We are having with us Nikhilesh Kataria sir as our keynote speaker. Sir is a practicing chartered accountant with an experience of 21 years. He completed his chartered accountancy in the year 1998. There are many judgments and articles published in leading tax magazines in his name. Sir has a versatile personality, having experience as life member of All India Federation of Tax Practitioners and life member of Rajasthan Tax Consultants Association. Sir is a past chairman of Direct Tax Committee, Tax Consultants Association Jaipur, and past chairman of Direct Tax Committee ICI. He is also been a regular speaker at various forums. It is a great honor for all of us to have you as our guest over this discussion of the Banning of Unregulated Deposit Scheme 2019. Lastly, I would request Sir to please enlighten us with these words of wisdom. Yes, thanks. Just allow me to relog in. I think there's some issue with the voice here. Just. Okay. Your video is also not there. So, am I audible? Yes, Nikhilesh. Yes. You are Yes. audible. So first of all, thanks organizer for introduction. And before proceeding to topic, thanks Bhupendra Bhai for inviting me as a keynote speaker. And I would say really it's a great initiative by Bhupendra and the whole team at Kalani and Company to organize such a program for students, and doing it with such consistency over past many weeks, I think.
It's really commendable. So many congratulations. Coming to today's topic, banning of unregulated deposit scheme act 2019. So we can call it Buds Act 2019 also, B for banning, U for unregulated, D for deposit, and S for scheme. So Buds Act 2019. Now the rules have also been notified under this act. Those are the draft rules, and every state have can have different rules. So those are the Buds rules 2020. Those have been notified on 12th of February 2020. Now, if we look at the act, it's a very small act of 44 sections and 11 rules. And act itself runs into just 20 pages. Rules are somewhat 3 pages. So overall, it's a very small act. I'm not sure if it is covered in your studies, but as I was just discussing with Bhupendra, that these small acts help you in 2, 3 ways. Firstly, it gives you an idea of the whole scheme of the section and whole scheme of the act and rules. Secondly, you come to know what are the interconnection with the different sections, and also it improves your interpretation skill. So in just 40 sections and 11 rules, you are able to understand that what are the main crux in any act. उसका introduction कैसे होता है, objective क्या होता है, कहाँ पे applicable है, उसमें rules कैसे आते हैं, या notify कैसे होते हैं, और उसको enforcing authority क्या है, penalty prosecution. So एक small act में आपको interpretation बड़ा clear होता है. So I think everyone should go through these small acts fully. So 40 section won't take your too much of time. It may be hardly raw bare act and rules you can read out in, say, let's say 4, 5 hours. So, but that will give you a very good understanding. Now, coming to the topic. So, why deposits are so important, and why deposits are so sensitive? If anyone can enlighten. Deposits, why those are important from government perspective or any compliance perspective? Yeah, so speakers themselves to please reply to this. Our speakers, student speakers. Actually, deposits are important to raise funds, to provide fund to any organization, and it is also plays important role for savings. No, but why those are sensitive? I mean, purpose we can understand. I can understand why those are sensitive then. Anyways, let me enlighten on that. Actually, there are two parts to it. Firstly, deposits can be a source of bogus capital. So that is one important part. And secondly, these are prone to financial frauds also. So these are the two important points one must consider before dealing with the deposits. If you look at the provisions under Income Tax Act 269 SS and 269T, they are since long in the act. I think the moment the act was introduced in 1961, they are coming from that time. So deposits may be a source of bogus capital. Suppose करिए मेरे को capital बढ़ानी है. Now capital can be increased only by paying taxes somehow, or maybe whatever you are filing returns and paying taxes or whatever with tax planning, but you cannot increase your capital without a formal mechanism. But डिपॉजिट इज अ सोर्स ऑफ बोगस कैपिटल कि आपने किसी से वैसे ही एंट्री ले ली, कैश दे दिया या उसके अकाउंट में कैश जमा हो गया. तो ये पहली that's why deposits is sensitive from that perspective. And second perspective with which this act is dealing with is a financial fraud, जहां पे कि मैं कुछ स्कीम लगा के और लोगों को मिसगाइड करके या मिसरिप्रेजेंटेशन देकर और मैं डिपॉजिट कलेक्ट करता हूं. Sometime it may be for genuine reason also, but generally it is for doing frauds and taking away money.
So deposits, so that's why the governments are sensitive towards deposits. Now, if you look at this act, the object is, I may just read out what it is speaks. An act to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit scheme other than deposit taken in the ordinary course of business, and to protect interest of depositors and matter connected thereto or incidental thereto. So basically, this is the act which deals with the uh, deposits which are taken from business perspective for doing some sort of business. So if we see the object itself, then ordinary course of business, if you are doing, if you require that capital or if you require for funds, then it is out of the purview of this act, because that has been taken in ordinary course of business. But other than ordinary course of business, if you are taking just doing deposits business, then it is covered. Or you are taking for other than ordinary course of business, then this covers that is covered under the act. Now this will come effect from 21st of February 2019. यहाँ पे जो एक important चीज आपको note करनी है कि the application of this act is to be done by the appropriate government. Appropriate government को जो उन्होंने define किया है, वो किया है सेक्शन 2(1) में. नाउ जो यूनियन टेरिटरीज है वहां पे उन्होंने डिफाइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जहां पे कि स्टेट है तो वहां पे किया स्टेट गवर्नमेंट को. तो ये लॉ तो बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन लार्जली जो इसको अप्लाई करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है. इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें, इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के रूल्स अभी नोटिफाई हुए हैं वो 2022 में ही हुए हैं. तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि रूल्स लाएं, स्टेट की जिम्मेदारी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वो डेजिग्नेट करें, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो डेजिग्नेटेड कोर्ट लाएं. Now this whole thing is to be done by the state government, but most of the government has failed, and Rajasthan has, I think they have birds rules have been implemented from 4th of August 2022. So this act has come in 2019, rules have come in 2020, but Rajasthan itself has applied notified on 4th of August 2022, one part. Second part, even till date, so far as I understand, I tried to find it out, but I couldn't find that even the competent authorities and designated court, if I were to talk about specifically in the sense of Rajasthan, they have not been notified. So effectively, there cannot be any application of the act, because it is the competent authority which has who have been given powers to implement this act. So that is from just from your knowledge. Yes. Nikhilesh, Yes. that means we can say that as of now, this act is not applicable? Absolutely. Or... In Rajasthan sense, and maybe in some other state, if they have designated these competent authorities and designated courts, then possibly they may take action under this act. अभी राजस्थान में मुझे कहीं भी नहीं मिला कि उन्होंने इसमें जी. No, so but then see, there must be one thing, that competent authority is empowered to take the actions which Absolutely. cannot be taken. But at the same time, since act is already there, rules are already there, which has been enacted, so the public and the companies or the other persons have to actually follow it. Suppose something is being found. Yes. Absolutely. Well, that thing is there. Yes. Has to be it is like, yes, action it is like that. Yes. Correct. Yes. They have become applicable, but they cannot be enforced as of now. But yes, if they were to enforce, like, they can enforce it from 2019 itself. So that's taken. Yes. So this is one thing. And then now what is the application? Application is coming from section 3 that says that the on and from date of commencement of this act, unregulated deposit scheme shall be banned.
No deposit taker shall directly or indirectly promote, operate, issue any advertisement soliciting participation or enrollment in or accept deposits in pursuance of unregulated deposit scheme. So सबसे important चीज जो है कि ये एक्ट की जो एप्लीकेशन है, अब वो ये कहती है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम हैज बीन बैंड। सो वायोलेशन क्या है इस एक्ट का? वो है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड नॉट ओनली डिपॉजिट। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। Then you need to read section 217, which is unregulated deposit scheme. What is unregulated deposit scheme? So that says means a scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not regulated deposit scheme as specified under column 3 of the first schedule. तो दो कंडीशन हो गई जबकि वो उसमें फॉल करेगी, दोनों मीट आउट होनी चाहिए। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम होने के लिए दो कंडीशन मीट आउट होनी चाहिए। पहला तो ये है कि वो स्कीम और अरेंजमेंट जो है वो बाय वे ऑफ बिजनेस किया जा रहा है, खुद डिपॉजिटर जो है बाय वे ऑफ बिजनेस ली जा रही है, नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और सेकेंडली ये है कि ऐसी डिपॉजिट फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 3 में फॉल नहीं कर रही है। तो हम अगर इसका फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम 3 देखेंगे तो वहां पे उन्होंने कुछ एक वहां पे रेफर किए हैं जो कि अदर एक्ट्स में जहाँ के प्रोसीजरली अलाउ किया है, जैसे कंपनीज एक्ट में एक प्रोसीजरली अलाउ किया, आप ऐसे ले सकते हैं, या इरडा में अलाउ किया हुआ है, तो वहां पे कुछ ऐसे 5-7 वहां पे दिया हुआ है। तो अगर आपका रेगुलर वे में आप उसको कॉम्प्लाई करते हुए ले रहे हो तो यहां से बाहर है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल है। तो ये पार्ट हो गया अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का। अब सबसे जरूरी जो आता है इन सबके बियॉन्ड भी कि डिपॉजिट खुद क्या है। ये तो हमने बात की अनरेगुलेटेड डिपॉजिट, बट देन व्हाट इटसेल्फ डिपॉजिट इज। तो सेक्शन जो 4 है वो डिपॉजिट को डिफाइन कर रहा है। तो डिपॉजिट में उन्होंने जो किया है वो एक्सपांडेड डेफिनेशन है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड, और वहां पे उन्होंने फिर उसका एक्सक्लूजन दिए हैं। तो वहां पे जो Hello, Nikhilesh. yes, Nikhilesh, you are mute for last 20 seconds. Okay. So Yeah. is it reaching this voice? Yeah. Now we are able to hear you. Okay. So जो डिपॉजिट इटसेल्फ है, डिपॉजिट एक्सपांडेड डेफिनेशन है। केवल हम 2-4 एक्सक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं कि या तो आपका कोई कैपिटल हो, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल ला रहे हो, या आपने अपने रिलेटिव से कोई लिया है, या पार्टनर्स ने अपने रिलेटिव से लिया है, या आपका कोई ट्रेड एडवांसेस है, बिजनेस एडवांसेस है, या आपका कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट है, डीलरशिप डिपॉजिट है। तो इस तरह के जो कुछ एक्सक्लूजन दिए हैं जो हम समझ सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आप उसको ले रहे हैं तो दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कवरेज ऑफ दिस सेक्शन। अब जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मेरे को पूरे एक्ट में जो मैं थोड़ा सा खुद भी नहीं समझ पाया, जो कि क्लैरिटी नहीं है, मे बी स्पीकर में थ्रो लाइट ऑन दैट पार्ट, एंड इवन इन द आई कुड नॉट फाइंड इट इन द गाइडेंस नोट जो आया है, FAQs जो आए हैं ICAI के, कि व्हाट हैपन्स टू द डिपॉजिट्स विच आर नॉट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट। तो सपोज करिए जब डिपॉजिट की स्कीम की डिपॉजिट की बात करते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म से मान लीजिए लोन ले लेती है, तो अगर मैं डिपॉजिट की डेफिनेशन देखता हूं तो उसके एक्सक्लूजन में ये कहीं भी नहीं है। सो इफेक्टिवली दिस इज द डिपॉजिट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दिस फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, बट दिस इज नॉट अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। मैं कोई स्कीम के उसमें नहीं ले रहा, मैंने वन ऑफ ले लिया, मेरे को फंड्स की जरूरत थी तो मैंने दूसरी पार्टनरशिप फर्म से ले लिया। सो इज देयर एनी कॉम्प्लायंस बर्डन इन दिस केस इफ that deposits is covered under the definition of this deposit section 4, whether any compliance burden comes on the person who is taking deposit
I could not find any compliance burden. Now, interestingly, Section 10 deals with the providing of information of carrying on business of taking deposits. So whether I need to inform that deposit under that, I just may read section 10, what it says: every deposit taker which commences or carries on its business as such on or after commencement of this act shall intimate the authority referred to in section subsection 1 of section 9 and about its business in such form and manner within such time as may be prescribed. तो रूल 7 फिर उन्होंने उसमें नोटिफाई किया कि किस फॉर्म में आपको देनी है. अब एक क्वेश्चन जो अराइज होता है कि वेदर दैट डिपॉजिट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड which is not in violation of this act, but that falls into category of deposit as per section 4. So that is one point which need to be looked at. जो एक और रेलेवेंट पॉइंट है कि यहाँ पे डिपॉजिट टेकर कोई बैन नहीं किया है, जो उसको सॉलिसिट करता है हुसएवर. मान लीजिए कोई फाइनेंस का ब्रोकर है और वो पैसा लगवा रहा है, तो सेक्शन 5 में ऐसे पर्संस को कवर किया गया है. जो सेक्शन 5 है तो वहां पे वो कवर है, तो उनके ऊपर भी पेनल प्रोविजन लगते हैं. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया. दोज आर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. दे नीड टू designate competent authority and also designated courts. ऑनलाइन डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है. दे विल बी डूइंग दैट. जो एक पार्ट है रेस्टिट्यूशन टू डिपॉजिटर्स, बहुत बड़े पावर दिए गए हैं इस एक्ट में. बिल्कुल वेरी एक्सपांडेड, आई वुड से बैलेट एंड पावर, कि जहां पे कि प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है और उसकी अपील केवल डेजिग्नेटेड कोर्ट में हो सकती है. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चाहे तो कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है. एंड वो अटैचमेंट का है जो रिलीज केवल डेजिग्नेटेड कोर्ट कर सकता है. उसके बाद वो उसके हाथ में भी नहीं है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में. सो दैट्स अनदर पार्ट. डेजिग्नेटेड कोर्ट के काफी पावर दिए गए हैं. डेजिग्नेटेड कोर्ट रिलीज भी कर सकता है, उसको कंफर्म कर सकता है अटैचमेंट को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डेजिग्नेटेड कोर्ट अपील वुड लाई ओनली इन हाई कोर्ट. जो पेनल प्रोविजन की बात करते हैं, पेनल एंड प्रोसिक्यूशन प्रोविजन, तो हर चीज का अलग अलग प्रोविजन है. अगर आपने सॉलिसिट की है डिपॉजिट, उसका पेनल प्रोविजन है. उसके बाद आपने एक्सेप्ट कर ली डिपॉजिट्स, तो उसका पेनल प्रोविजन है. उसके बाद आपने अगर रीपेमेंट में फ्रॉड कर लिया तो उसका अलग प्रोविजन है. और जो मैं बात कर रहा था सेक्शन 5 की, कि अगर और कोई पर्सन ऐसा इन्वॉल्व है जो कि इंस्ट्रूमेंटल है उस डिपॉजिट को लगवाने में डिपॉजिट टेकर के पास, देन अगेन दैट इज सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन. एक तो क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रह जाते हैं पहले कि व्हाट हैपेंस टू द डिपॉजिट व्हिच हैव बीन टेकन बिफोर कमिंग फोर्स ऑफ दिस एक्ट, वेदर इट वुड बी एप्लीकेबल ऑन दोज डिपॉजिट्स, whether the attachment of properties may be done under this act in which has been in violation of the provision before coming into force of this act. तो जैसे कि खूब सारे घोटाले में नवजीवन हुआ है, संजीवनी हुआ है, या वेस्ट बंगाल में हुआ है, तो ऐसी पोंजी स्कीम और ये सब आई हैं. तो वेदर those which have come into light before 2019, whether action can be taken here. तो इस एक्ट में I could not find any clarity, which again is a matter of deliberation. So that's all. I think this is a very small act. So these are the provisions, and I have highlighted where the deliberation, highlighted the points where the deliberation may be required. So that's all. If you want to put any question, then you may please. Nikhil's, probably the participants, being the very new topic, may not have Yes, many yes, of the absolutely, questions. absolutely. Yeah, It was new for me but also. but what I feel is that uh, by your expertise, you have rightly summarized the entire Birds Act 2019 as well as the Rules 2020, and almost covered each and every aspect of the Act as well as the rules. Few of the questions which has been raised were regarding
like suppose any partnership firm Yeah. accepts a deposit from the another partnership firm, Mm. whether it will also be called as unregulated or not. So that answer we shall try to find out. And Mm. then another two questions which were there regarding if the deposit is being taken before the commencement of the act, whether Yes. that will be covered, or whether there are suppose certain issues, uh, certain actions which have been taken by the government of the respective states or the government of India before 2019 with respect to any of the such scheme, Yes. whether the properties etc. can be attached uh, under the provision of this particular scheme or not. So that we shall try to find out. Yes. Uh, yes. With this, we are really thankful to you for being here as a keynote speaker, and Thank. we would rather request you to stay here according to your convenience, so that how our students have prepared can also be Yes, seen by absolutely. you. Absolutely. Yeah, yeah, I, yeah. So yes. now, yes, yes. I now request our speakers for the day to start with their presentations. Thank you, sir, for your views. Your explanation was quite informative as well as graphs. Thank you. Starting with the presentation, the Banning of Unregulated Deposits Scheme Act 2019. In our today's presentation, we will discuss about what is unregulated deposit scheme, what is regulated deposit, what is deposit, who can be a deposit taker, and so on. So let's start the presentation. This act was introduced in Lok Sabha on 18 July 2018, and it was referred to Standing Committee on 10th of August 2018. The Standing Committee gave its report on 3rd of January 2019, which was later on passed in Lok Sabha on 13 February 2019. Then, President promulgated the ordinance on 21st February 2019, which received the assent of President and Legislature on 31st July 2019. Basically, this act came into force on 21st July February 2019. Moving forward, what is the objective behind this act? Why So this act? I think as rightly mentioned by our keynote speaker, regarding that, of course, the act has been enacted by the government of India, central government, but at the same time, respective states have also to issue the relevant act as well as the rules. And it is same like GST. The entire act, GST, first have been issued by the government of India, then respective state have issued their own uh, GST acts. So, in the same manner, various acts have to be enacted by the state governments. And as mentioned by Nikhilesh, that few of the states have already enacted the act, including the state of Rajasthan, which has been where act has been enacted in the August 2022. So that feature also one has to keep in mind whenever they are, say, auditing or looking after or consulting with the respective uh, clients or other persons. Yes. Moving forward, what is the objective behind this act? Why this act came into force? The main objective why this act came into force is to ban the unregulated deposit scheme prevailing in the market other than deposit taken in the ordinary course of business, and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto. So this act came into force to regulate the unregulated deposit scheme and to prevent the interest of depositors. Moving forward, एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। so from this period, it can be clarified that this act basically came into force to stop these unregulated deposits, to stop these non-functioning things happening in the market. So basically, this video
this video is answer to the Nicholas ji's question that what is the sensitiveness? ऐसा क्या सेंसिटिव चीज है जो ये एक्ट को लेके आना पड़ा? और हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पे कई सारे ऐसी स्कीम्स आती रहती है जहां पे ये बोलते हैं कि साहब आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 3 महीने में 2 लाख रुपए वापस रिटर्न कर देंगे या 5 लाख रुपए वापस रिटर्न कर देंगे। तो ये एम्बिग्युइटी हमेशा कई सारी स्कीम्स में इस तरीके की मार्केट में लोग लेकर के आ जाते हैं, एंड एनी सच स्कीम्स आर एक्चुअली अनरेगुलेटेड। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए ये एक्ट बेसिकली यहाँ पर है। I would rather request Nicholas to please comment on this particular video and how do he see this scheme as a check for any such actions by any of the scheme provider. If Nicholas is hearing us, otherwise you can continue. Just a moment, I Yeah. missed that. What? Okay, there was a video which has been basically. Yes, I have seen that. Yes. Yeah. So I'm just saying that to curb all such things, basically this particular act is there. Yes. Amiron ki Yes. scheme jo. Yeah. So you can continue, Jayanti. Yeah. But absolutely relevant video, undoubtedly. Yes. Moving forward, what is the definition of deposit? What is covered in the definition of deposit? Deposit means any amount of loan or advance taken by a deposit taker with a promise to return. कोई भी ऐसा अमाउंट जो अगर आप एज अ फॉर्म ऑफ लोन और एडवांस लेते हो, इस प्रॉमिस के साथ कि आप उसको फ्यूचर में रिटर्न करोगे आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, वो या तो कैश की फॉर्म में हो सकता है या काइंड की फॉर्म में हो सकता है, विद और विदाउट एनी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बोनस, प्रॉफिट एक्सेट्रा. So, कोई भी loan or advance with a promise to return after a specified period, either in the form of cash or in kind, with or without any benefit, is called as deposit. But there are some exclusions from this definition. They are: deposits exclude any amount or loan from a scheduled bank or a cooperative bank or any other banking company as defined in Section 5 of Banking Regulation Act 1949. कोई भी scheduled bank से अगर आप loan लेते हो, that is not covered in the definition of deposit in this act. Amount received as loan or financial assistance from public financial institution notified by the central government in consultation with the Reserve Bank of India or any non-banking financial company as defined in clause F of section 45I of Reserve Bank of India Act 1934. कोई भी अमाउंट अगर हम लोन के फॉर्म में लेते हैं किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से, तो वो अमाउंट भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में नहीं आएगी. अगर हमें कोई अमाउंट मिलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से in the form of loan or any other form, that is also not covered in the definition of deposits. Further, amount received from foreign government, foreign international bank, multilateral financial institution, foreign government-owned development financial institution, foreign export trade collaborations, foreign bodies corporate, foreign citizen, foreign authorities, person residing outside India, subject to the provisions of FEMA and the rules and regulation made thereafter. कोई भी अमाउंट अगर हम एज ए लोन और एडवांस लेते हैं किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी भी फॉरेन एक्सपर्ट कोलैबोरेशन से, तो वो भी कवर्ड नहीं होगी डिपॉजिट की डेफिनेशन में. मूविंग फॉरवर्ड, अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कैपिटल बाय पार्टनर. कोई भी पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंडर और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंडर, तो वो भी इस डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होंगे, डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे. अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय ए वे ऑफ लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव. कोई भी अमाउंट अगर कोई इंडिविजुअल अपने रिलेटिव से लेता है एज अ लोन, दैट इज आल्सो नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट. अमाउंट रिसीव्ड एज क्रेडिट बाय अ बायर फ्रॉम अ सेलर. क्रेडिट पे अगर कोई बायर किसी सेलर से गुड्स लेता है और ऑन द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, दैट इज आल्सो नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट. Amount received by an asset reconstruction company which is registered with the Reserve Bank of India under Section 3 of the Securities and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002.
सरफाइसी एक्ट के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर उससे हम कोई लोन लेते हैं तो वो भी इस डेपोजिट की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होता. Any deposit made under Section 34 or an amount accepted by a political party under Section 29B of the Representation of People's Act 1951. पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई अमाउंट हमें मिलता है तो वो भी डेपोजिट की डेफिनेशन में कवर्ड नहीं होता. एनी पीरियडिक पेमेंट मेड बाय द मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप से अगर मुझे कोई पेमेंट मिलता है तो वो भी डेपोजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. एनी अमाउंट कलेक्टेड फॉर सच पर्पस विद इन सच सीलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और कोई अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट से अगर मिलती है तो वो भी कवर नहीं होगी. फर्दर, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कोई भी अमाउंट एज अ पर्पस ऑफ बिजनेस मैं ले रही हूँ लोन की फॉर्म में, तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. पेमेंट एडवांस और पार्ट पेमेंट फॉर द सप्लाई और हायर ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, गुड्स सप्लाई करने के लिए, हायर ऑफ गुड्स के लिए और प्रोविजन ऑफ सर्विस के लिए अगर मैं कोई लोन पेमेंट ले रही हूँ, एडवांस कर रही हूँ, पार्ट पेमेंट कर रही हूँ, दैट इज आल्सो नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट एंड इज रीपेबल इन द इवेंट द गुड्स और सर्विस आर नॉट इन फैक्ट सोल्ड, हायर्ड और अदरवाइज प्रोवाइडेड. एडवांस रिसीव्ड इन कनेक्शन विद कंसीडरेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन अग्रीमेंट, अगर आपको कोई एडवांस मिलता है इन कनेक्शन विद इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन अग्रीमेंट or arrangement subject to the condition that such advance is adjusted against such immovable property as specified in the terms of agreement or अरेंजमेंट. कोई एडवांस मुझे मिलता है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और वो फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एडजस्ट होगा तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता. सिक्योरिटी और डीलरशिप डिपॉजिटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस, कोई भी सिक्योरिटी और डीलरशिप अगर मैं डिपॉजिट कराती हूँ फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस तो वो भी डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. एनी एडवांस अंडर द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट फॉर दोज स्पेसिफाइड इन आइटम 2, कोई भी एडवांस अगर मैं देती हूँ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, दैट इज आल्सो नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट. मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर टू प्रोवाइजो फॉर द अबाउट पॉइंट्स. फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है कि आइटम 1 to 4 जो कवर्ड थे ऊपर 1 to 4 पॉइंट एल के अंदर, such amount shall be deemed to be deposit on the expiry of 15 days from the date on which they become due for refund. अगर वो 4 पॉइंट के अंडर कवर्ड जो अमाउंट्स है अगर वो रिफंडेबल होती हैं तो 15 डेज के अंदर अंदर हमें उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो वो इस डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगी. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द सेट अमाउंट बिकम रिफंडेबल ड्यू टू द डिपॉजिट टेकर नॉट ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन ऑफ अप्रूवल अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर आप नेसेसरी अप्रूवल नहीं लेते हो या परमिशन नहीं लेते हो डिपॉजिट देने से पहले, wherever required, जहाँ भी जरूरत हो, to deal the goods or properties or services for which money is taken, such amount shall be deemed to be deposit. उससे the day from which you took the deposit, उसी दिन से deposit मान लिया जाएगा. Now there is a question whether the amount received by public financial institution or NBFC is included under the definition of deposit. Anyone can answer. Your presentation is not there, Jayanti. You can just check it. Yeah. So everyone is requested to give their answer in the message box. Whether the amount received by public financial institution (NBFCs) included in the definition of deposit, whether they are considered as deposit. So the answer is no, they are not included under the definition of deposits because they are exempt by virtue of section 2 subsection 4 clause B of the Act. Further, in case an individual takes loan for personal purpose to purchase immovable property, is it a deposit? Yes, it is a deposit as it is taken, as it is not specifically exempt under section 2 subsection 4 of the Act. अगर आप कोई लोन लेते हो अपने पर्सनल पर्पस के लिए टू परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में कवर्ड होगी अंडर दिस एक्ट. नाउ देयर इज अ पोजर. Mr. R.K., a resident individual, has borrowed the fund from various parties from Ahmedabad as unsecured loan at the rate 1%. R.K. ने लोन लिया है at the rate of 1%. This fund is utilized as under whether this act will be applicable or not. आरके ने लोन लिया 1% पे, फर्दर उसने जेकी को ये लोन दे दिया एट द रेट ऑफ 2%. नाउ वेदर दिस विल बी कवर्ड इन दिस एक्ट और नॉट.
So everybody is requested to give answer in the message box, please. Uh, your present, yeah. So Harsh has answered yes. Yes, he's right. It will be covered under this act because he cannot do this as a business. He cannot take loan at 1% and further give it to others on at the rate 2%. This is not this is covered under this act. And if the same person transferred this to Dubai in Mr. RK account and then invested by him in LLC at LLC at Dubai, where Mr. RK is partner for the gold business. अगर वो इस अमाउंट को दुबई में अपनी एक पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर करता है जहां वो एक पार्टनर है तो क्या ये अमाउंट इस एक्ट के अंडर कवर होगा या नहीं दिस विल नॉट So बी anyone कवर्ड else? So it appears that only Harsh is hearing the class, others are not hearing. He is again answering no. this will not cover under this act and if he utilizes amount for gold business by Mr. RK in proprietorship form proprietorship in India अगर वो अपनी proprietorship में यूज करता है ये फंड्स तो भी वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा because he can use this fund in his business but he cannot do it as a business. Moving forward, deposits as per specified acts. Yeah. With this, I request yeah, Nicholas, please. Yeah, just one small question for the speaker that what happens if I have taken loan from financial institution and banks, okay, and some unsecured loan, and let's say I have got some surplus fund which I have given for short-term deposit, okay. So whether that would be covered, I'm giving, let's say, short-term, I'm investing for short-term, let's say one, because everyone is doing that, 30 days, 60 days treasury bills, or maybe overnight funds. So a lot of large companies are doing that. So whether that would be covered, because the same manner, because you have taken it on interest and giving on interest. So how does it, would you But you say, have taken from a bank. suppose I have got some unsecured loan in my balance sheet also, then? If you are doing it as a business, then that is covered. So I'm asking that whether it would be seen as a business or not. Like your main objective and main business is to take loans, unsecured loan, and give it further to others as unsecured loan, then that is covered in this act. Yes, I think yes. So I request coordinators, batch-wise coordinators, to please ensure that their batchmates give the reply in the message box. Yeah, continue, Jayanti. Moving forward, deposits as per specific acts. There are specific definitions given in specific acts for deposit. In respect of a company, the expression deposit shall have the same meaning as assigned to it under the Companies Act 2013. Companies Act 2013 के अंदर deposit की एक specific definition दे रखी है. For that purpose, deposit की वही definition applicable होगी जो वहाँ लिखी हुई है. In respect of a non-banking financial company registered under the Reserve Bank of India Act 1934, the expression deposit shall have the same meaning. एनबीएफसी के केस में जो डेफिनेशन आरबीआई एक्ट में लिखी हुई है वही एप्लीकेबल होगी डिपॉजिट की द एक्सप्रेशन पार्टनर एंड फर्म शैल हैव द सेम मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर और फर्म की जो डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है सेम डेफिनेशन विल बी एप्लीकेबल द एक्सप्रेशन पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन क्लोज क्यू ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पार्टनर की डेफिनेशन जो एलएलपी एक्ट में लिखी हुई है उसके एलएलपी के कंसर्न में वही डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी द एक्सप्रेशन रिलेटिव शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इट इन द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर जो रिलेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है दैट विल बी एप्लीकेबल मूविंग फॉरवर्ड डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट टेकर लाइक हु कैन बी अ डिपॉजिट टेकर any individual or group of individual proprietorship concern partnership firm limited liability partnership company association of person trust a cooperative society or multi-state cooperative society,
any other engagement, whatsoever nature, receiving or soliciting deposit, but does not include. Basically, deposit taker की definition में सारी person cover होते हैं, except deposit exclusions है. First, a corporation incorporated under an act of parliament of state legislature. Any corporate which is incorporated through an act of parliament or state legislature, they are not covered under the definition of deposit taker. Further, a banking company or corresponding new bank, the State Bank of India, subsidiary bank, a regional rural bank, cooperative bank, or multi-state cooperative bank is as defined in Banking Regulation Act 1949. कोई भी बैंक, cooperative new bank, State Bank of India, subsidiary bank, regional rural bank, cooperative bank, multi-state cooperative bank, ये सब deposit taker की definition से exclude किए गए हैं. Further, what is the definition of a depositor? Any person who makes a deposit under this act will be known as depositor. Now, what is unregulated deposit? A scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by any deposit taker by way of business and which is not a regulated deposit scheme as specified under clause 3, column 3 of first schedule. Every deposit जो कि column 3 में covered नहीं है, that will be a unregulated deposit. तो unregulated deposit पढ़ने के पहले हमें पढ़ना होगा regulated deposit scheme क्या है. Regulated deposit scheme, column 3 और first schedule हमें define करता है कि regulated deposit scheme क्या है. The Securities and Exchange Board of India, any scheme launched, sponsored or carried out by a collective investment management company registered with the Securities and Exchange Board of India under the Securities Exchange Board of India. कोई भी scheme जो sponsor करी गई है SEBI के through उसके through manage की गई है वो regulated deposit माना जाएगा and that is excluded from unregulated deposits. Reserve Bank of India, any scheme or arrangement regulated by under the Reserve Bank of India Act 1934 or guidelines or circulars of the Reserve Bank of India. कोई भी scheme जो RBI govern करता है that will be known as regulated deposit scheme. Insurance Regulatory Development Authority, state government और union territory, अगर ये कोई scheme launch करते हैं तो उसे हम regulated deposit scheme मानेंगे. इन act पे ये सारे act के अंदर जो भी deposit लिए जाएंगे उन्हें regulated deposit माना जाएगा. National Housing Bank, Pension Fund Regulatory and Development Authority, Employee Provident Fund Organization, Central Registrar, Multi-State Cooperative Society, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, any scheme or arrangement under which deposits are accepted by a company declared as Nidhi or Mutual Benefit Society under Section 406 of the Companies Act 2013. All these will be known as regulated deposit scheme. Banning of unregulated deposit scheme. Section 3. On and from the commencement of this act, unregulated deposit scheme shall be banned. इस एक्ट के आने के बाद कोई भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट है तो उसे बैन कर दिया जाएगा. नो डिपॉजिट टेकर शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट, ऑपरेट और इशू एनी एडवर्टाइजमेंट soliciting participation or enrollment in or accept deposit in pursuance of an unregulated deposit scheme. Section 3 is a very important section of this act which says कि कोई भी डिपॉजिट इस एक्ट के आने के बाद दिया जाता है तो उसे अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम माना जाएगा और उसे बैन कर दिया जाएगा. नो डिपॉजिट टेकर, कोई भी डिपॉजिट टेकर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकता, ऑपरेट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता, कोई एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिट नहीं कर सकता किसी को पार्टिसिपेशन के लिए और एनरोलमेंट के लिए, और एक्सेप्ट नहीं कर सकता डिपॉजिट, और ये सब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम में कवर किए जाएंगे. Section 4. So, Nikhilesh bhai, here basically the answer to your question lies, I think. What does they say that on and from the date of commencement of this act, the unregulated deposit scheme shall be banned. So that means if something is already there, since this act has now been commenced, so whether since deposit is already there, and this particular act says that if something falls under the unregulated deposit scheme, then that will be banned. It does not specify that from which date it is being issued or whether anything else is applicable on that in that particular state or not. So it's just a view. But the confusion arises from the fact that provisional attachment power which has been given, suppose in lot of society fraud cases which have
already been detected and they have already been banned, then what is the position? So Yeah, that is the second limb of your question. So that we shall again see. But so far as any schemes which are already being commenced earlier, and now if it is this particular act is there, then that will be banned. yes, that should be fair interpretation. Yes. Yes, Jayanti, you can continue. Moving forward to section 4, no deposit taker while accepting deposit pursuant to a regulated deposit scheme shall commit any fraudulent default in the repayment or return of deposit on maturity in rendering any specified service promised against such deposit. कोई भी डिपॉजिट टेकर रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट करता है रीपेमेंट के अंदर तो उसे सेक्शन 4 में कवर किया जाएगा. Section 5. No person by whatever name called shall knowingly make any statement, promise or forecast which is false. कोई भी person कोई भी ऐसा statement नहीं कर सकता जो कि वो उसे पता है और ऐसा statement नहीं कर सकता जो कि गलत है, deceptive है, misleading है, material fact और deliberately conceal करता है कोई material fact to induce any person to invest or become a member or participant of any unregulated deposit scheme. किसी को आप गलत इंफॉर्मेशन देके अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के अंडर उनसे पैसा नहीं ले सकते. दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 5. फर्दर सेक्शन 6, a price sheet or a money circulation scheme banned under the provisions of Price Sheet and Money Circulation Scheme Act 1978 shall be deemed to be an unregulated deposit scheme under this act. कोई भी प्राइस शीट मनी सर्कुलेशन स्कीम के अंदर आप पैसा लेते हो तो वो अमाउंट भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मानी जाएगी इस एक्ट के अंदर. Now there is a question on which of the following this act is applicable. Any one of you can answer. In the message box, please answer whether A, B, C, or D. So it is compulsory to answer. You need to answer whether A, B, or C, or D. Coordinators, please take care. The answer is C, Price Sheets or Money Circulation Scheme. Jayanti, 1 minute. Let coordinators to please take care of this particular thing. If there is any questions, everyone has to answer. I know you all are hearing, but at the same time, it should see that you people are active. So, Jayanti, if there is any objective type questions, please keep on 1 or 2 minutes so that everyone can answer. So, Mihir Khandelwal answered C, Subhanshi also C. Of course, you have already announced the answer. Yes. तो पेपर लीक कर दिया आपने पहले से. ठीक है. Now everyone can continue. So, and at the same time, I request you, whenever there is any such query, give some options so that everyone can actually answer. Yes, continue. The remaining part will be covered by my co-speaker, Dipen. Good afternoon, everyone. My name is Dipen Singh. अनरेगुलर जो आया आपने सेक्शन 3 में कॉन्ट्रावेंशन बताया था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शन 7 के अंदर ऑथोरिटी डिफाइन की गई है. तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 अपन को बोलता है कि एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है ऑफिसर्स को जो एज अ कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, जो कि उसकी रैंक भी डिसाइड कर दी उन्होंने कि गवर्नमेंट की जो सेक्रेटरी रैंक होती है उससे बिलो नहीं होगी. तो सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल बाय द नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट one or more officer not below the rank of the secretary to that the government as the competent authority for the purpose of district.
सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो अपॉइंट करेगी एक ऑफिसर्स को जो असिस्ट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो सबसेक्शन 2 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में by a notification appoint such other officer or officers as think it fit to assist the competent authority in discharging its function under this act। सेक्शन 7 में पावर दी गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को। तो सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और असिस्टेंट जो अपन ने भी सबसेक्शन 1 और 2 में अपन अपॉइंट किए थे, उनको लगता है, उनको रीजन बिलीव होता है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है सेक्शन 3 का, जो सेक्शन हिंदी ने भी डिफाइन किया था। तो राइटिंग में ऑर्डर निकालेंगे कि हम प्रोविजनली अटैच कर रहे हैं डिपॉजिट, जो डिपॉजिट टेकर के पास जितनी भी डिपॉजिट है वो प्रॉपर्टी जो डिपॉजिट टेकर के नाम पे है वो, और any property जो नेम ऑफ द एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द डिपॉजिट टेकर, इन तीनों को वो अपने प्रोविजनली अटैच कर लेगा। तो सबसेक्शन 3 ये है कि वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर अपॉइंट अंडर द सबसेक्शन 2 has a reason to believe, the reason for such belief to be a record in writing on the basis of such information that any deposit taker in soliciting deposit in the contravention of section 3 he may by an order in writing provisionally attach the deposit held by the deposit taker and the money or the other property acquired either in name of the deposit taker or in the name of any other person on the behalf of deposit taker from the date of order in such manner may be prescribed। सबसेक्शन 4 बोलता है कि सबसेक्शन 3 को मतलब जो रीजन टू बिलीव किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो सबसेक्शन बोलता है कि आपको पावर दी जा रही है, पावर सेम होगी जो सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है उसके हिसाब से। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेल फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 3 हैव द सेम पावर एज अ वेस्टेड इन सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 while conducting investigation or inquiry in respect of the following manner। तो वहाँ पावर दी गई है जैसे कि आप डिस्कवरी इंस्पेक्शन कर सकते हो, कंपाइलिंग एंड फोर्स द प्रोडक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो, रिसीविंग कर सकते हो एविडेंस को ऑन एफिडेविट पे। नेक्स्ट अपना यह है कि जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगा कि कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है सेक्शन 3 का, तो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करी, उसके बाद उनको लगा कि पर्सन को नेसेसरी लगते हैं वो समन के लिए उनको बुला सकता है। तो सबसेक्शन 5 यही बोलता है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेल हैव टू पावर summon any person whose attendance has he considered necessary whether to give evidence or to produce any record during the course of the any investigation or proceeding under this act। सबसेक्शन ये बोलता है कि जिस पर्सन को बुलाया गया उसको रिस्पॉन्स करना जरूरी है। तो ऑल द पर्सन so summoned has be bound to attend in person or through authorized agent। सबसेक्शन 8 जो है बोलता है सेक्शन 7 का कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और सबसेक्शन 2 के अंदर असिस्ट जो अपॉइंट किया था उसमें बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिटेन कर सकता है रिपोर्ट को, जितने भी रिकॉर्ड अपन ने इन्वेस्टिगेशन में प्रोड्यूस किए हैं उसको रिटेन कर सकता है। तो सब बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी ऑफिसर रेफर टू द इन सबसेक्शन 2 एनी इम्पाउंड और रिटेन इन कस्टडी फॉर सच पीरियड एज ही थिंक फिट एनी रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। लेकिन दो कंडीशंस है वो जब उसको रिटेन करके नहीं रख सकता। फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसने रिकॉर्ड रिटेन किए लेकिन उसने रीजन राइटिंग में नहीं लिखा, इम्पाउंड एनी रिकॉर्ड विदाउट रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर सो डूइंग। सेकंड रीजन ये है कि उसने 3 महीने से ज्यादा उसको रिटेन करके रख लिया और उसने अप्रूवल नहीं मांगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से टू रिटेन इन कस्टडी एनी सच रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ विदाउट द ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। सेक्शन 8 जो है डेजिग्नेटेड कोर्ट के बारे में बात करता है। तो इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू कंस्टिट्यूट करेगी वन और मोर कोर्ट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और केसेस के। और नोटिफिकेशंस के अंदर एरियाज और केसेस डिफाइन होंगे और जज की जो रैंक होगी वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज नहीं होगी। और जो डेजिग्नेटेड कोर्ट होगा वो ज्यूरिडिक्शन होगा इन इसके एक्ट के अंदर जितने मैटर होते हैं उसके लिए। तो नो कोर्ट अदर देन द डेजिग्नेटेड कोर्ट शेल हैज द ज्यूरिडिक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू व्हिच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई। सेक्शन 9 ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी एक डिजाइन करेगी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी लाएगी, वो मेंटेन करेगी डिपॉजिट टेकर के सारे इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन डेटाबेस पे। So central government has been designated an authority, whether the existing or to be constitute, which shall create a maintain and operate online database for information on the deposit taker operating in India।
तो अभी करंटली जिस ऑथोरिटी है वो है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्युरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इसको सरसाइज शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि ऑथोरिटी इज डेजिग्नेटेड अंडर सबसेक्शन 1 may require any regulator or the competent authority to share the such information on the deposit taker as may be prescribed। अगर जो अथॉरिटी आपने डेजिग्नेटेड की है सेक्शन 1 के अंदर, सब सेक्शन 1 के अंदर, तो उसको जो भी रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन है वो रेगुलेटर्स और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो मांग सकता है। सेक्शन 9 सेक्शन 10 बोलता है इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस बाय द डिपॉजिट टेकर। जितने भी डिपॉजिट टेकर है विच कमेंस करते हैं बिजनेस को इस एक्ट के आने के बाद या कैरी कर रहे हैं बिजनेस को, वो उनको इंटीमेट करना है अथॉरिटी को कि हमारा बिजनेस क्या है और कैसे चल रहा है। मतलब एवरी डिपॉजिट टेकर विच कमेंस और कैरी ऑन इट्स बिजनेस एज सच ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट सच इंटीमेट द अथॉरिटी अबाउट इट बिजनेस इन सच फॉर्म और मैनर विथ इन सच टाइम एंड मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है ऑथोरिटी को, तो उस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी। तो वहां पे अगर कॉम्पिटेंट सबसेक्शन 2 बोलता है कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को बिलीव होता है कि कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है सेक्शन 3 का, तो और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है डिपॉजिट टेकर से। तो सबसेक्शन 2 ए बोलता है कि द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी में इफ इट हैज अ रीजन टू believe that the deposits are being solicited or accept the pursuant to an unregulated deposit scheme, direct any deposit taker to furnish such statement, information or particulars as it the consider necessary relating to or connecting with the deposits received by such deposit taker. So here the answer to Nikhil's questions regarding that whether a partnership firm is taking a deposit from another partnership firm, whether it is covered as an unregulated deposit scheme or not. So the point is that this may not be covered, but so far as information is concerned, as a deposit taker, probably the partnership firm is required to inform to the central government that yes, these deposits have been taken by us. Is it so? I think Nikhil, what is No, my query was with regard to that is of course deposit. One partnership firm giving loan to yes, another partner, yes, that is covered in the definition of deposit. But whether correct. that information need to be given, I doubt that, because if you read section 10, it only Yes. speaks of information when somebody is carrying taking deposit as business. So I think there is some catch. Then I don't understand one who is violating, why he would give information to government. Then why such rule is there? But if we read the rule, then it says that only the person who is taking as business need to give that information. So if that is the case, then there a lot of assessees would be covered. I mean, if I were to interpret that any person who is whatever is not covered under the definition of under exemption, he need to inform, then I think a lot of assessees would be covered, tens of thousands of assessees. So little confusion is there about that. Yeah, so basically it says that commences or carries on its business as such on or after Yes. the commencement of this act. Yes. So yes, business yes. as such means business of deposit. Yes. So one partnership firm giving to other will not be covered here. May not be covered. Yes. Hmm. But suppose anyone who is doing the business of deposits, but is not having any schemes as such. Say any person who is into the money lending business and he is taking the deposit on regular basis from people. As such, nothing sort of deposit schemes or that has been announced. But I think by way of its conduct, he has a regular deposit scheme that he is taking money from people and giving it to the others and giving some interest on the depositors, interest to the depositors. So probably people who are engaged in the money lending business, but are it's they not covered? that prohibited. I mean, only NBFCs can do that. I mean, I have that is that is otherwise prohibited. That is otherwise prohibited because of RBI. But is covered also? Is that covered here also? That one need to see. I think those are the instances which are covered.
But then the Yes. question arises: one who is violating, why he would give information to the government? That is okay. That is Yes. So that, of course, what you are saying, if one is taking as business, accepting and then giving back to some others on interest, then that would be covered here. But the logical question then would arise that one, if I am violating the provisions, then why one would be giving that information? So what is the purpose of then this section 10? so probability a situation. Now again, I am assuming. Yes. Suppose a partnership firm is there, or that firm takes deposit from say 10 of people, 10 Okay. or hundreds of people, Hmm. where they say that this is the scheme and I am taking money from you Hmm. under this particular scheme, and Hmm. that is again is being utilized only for the purpose of its business, actually, like Okay. company's deposit scheme. Hmm. Hmm, So hmm. is in that case, is that partnership firm is required to inform to the central government? No, I don't think, because if you again read section 10, that talks only about when it is accepted as business as such. It means you are in the lending business only, taking and No, lending. it's no. It says carries on its business as such. Its business is which business? With commences Every of deposit which commences or carries on its business as such. So otherwise, nobody would be covered. yes, that's the confusion. Yes. But then if you So then I think then it will have vast application if it yes, were to be this interpreted that I way. I I feel that this may have vast applications on. Let Uh, me read it. Section 10. Every deposit taker which commences, deposit taker, which commences or carries on its business as such on or after the commencement shall intimate the authority referred in about its business in such form and manner. Then again it says about its business in such form and manner as may be prescribed. So, I mean, if I am into, let's say, iron manufacturing, so what they were to do with my business? So, I mean, थोड़ा सा मतलब मेरे को confusion लगता so है कि but इसमें but but I think wherever our partnership firms are there, and suppose they have taken deposits from 10, 20 people, one हम्म, need to actually examine this particular issue. yes, yes, I feel that. yes, Yes. yes, yes. It may or may not be applicable. Both things are there. Correct, 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 Legal correct. clarity is required. Yeah. So continue, speakers. Section 11. Information to be shared. The competent authority shall share all the information received under section 29. Under section 29 बोलता है कि जो पुलिस ऑफिसर के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को शेयर कर दे. तो यहाँ बोला जा रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है सेक्शन 29 से वो सीबीआई को और अथॉरिटी जो सेक्शन 9 में अपन ने ऑनलाइन डेटाबेस के लिए अपॉइंट की थी उसको भेज दिया जाए. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव अंडर सेक्शन 29 with the central CBI and with the authority which may be designated by the central government under section 9. Subsection 2 बोलता है the appropriate government, any regulator, income tax authority or any investigation agency having any information or document in respect of the offence investigate under this act by the police or the CBI shall share all such information or document with the police or the CBI. Section 3 बोलता है कि where the principal officer of any banking company, a corresponding new bank, the State Bank of India, a subsidiary bank, a regional rural bank, a cooperative bank, or multi-state cooperative bank, has a reason to believe that any client is a deposit taker and it acting in contravention to the provision of this act, he share all further information the same to the competent authority. सेक्शन 12 बोलता है प्रायोरिटी ऑफ द डिपॉजिटर क्लेम. तो सेक्शन 2 ये बोलता है कि जितना भी गवर्नमेंट को पे करना है, जैसे कि मान लो टैक्स हो गए, सेस हो गए, अगर गवर्नमेंट को पे करना है तो उससे पहले जो जितना भी अमाउंट ड्यू पड़ा हुआ है डिपॉजिटर के पास जो प्रोविजनली उसने अटैच किया था, तो डिपॉजिटर को पहले पे किया जाएगा ऑन दी और टैक्स वो केसेस जो होंगे बाद में पे किए जाएंगे.
तो any amount due to the depositor from a deposit taker shall be paid in the priority over all other debts and all revenue, taxes, cesses and other rates payable to the appropriate government or the local authority. ऐसे ही सेक्शन 3 बोलता है कि जो अपन ने प्रोविजनली प्रॉपर्टी जो थी अपन ने प्रोविजनली अटैच की थी, तो उसे पैसा रिकवर करना होगा, तो पहला पैसा जो है डिपॉजिटर को दिया जाएगा. तो an order of a provisional attachment passed by the competent authority shall have the precedence any priority to the extent of the claim of the depositor over any other attachment by the any authority competent to the attached property for the repayment of any debt, revenue, taxes, cesses and other rate payables to the appropriate government or local authorities. सबसेक्शन 2 इसका बोलता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट कब तक रहेगा, जब तक कि सेक्शन 15 के अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट फाइनल जो है ऑर्डर ना दे दे. तो वेयर द एनी ऑर्डर ऑफ अ प्रोविजनल अटैचमेंट हैज बीन पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सच अटैचमेंट शैल बी कंटिन्यू अंटिल एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर द सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 15 बाय द डेजिग्नेटेड कोर्ट. सबसेक्शन 3 जो है वो बोलता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो शेड्यूल बैंक में जाके अकाउंट ओपन करेगी, जिसमें जितना भी अमाउंट उसने रियलाइज किया है डिपॉजिटर टेकर से वो उसमें डिपॉजिट करा देगी. एंड व्हिच शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट द अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपॉजिट और डेजिग्नेटेड कोर्ट. सबसेक्शन 4 बोलता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल नॉट डिस्पोज of or alienate the property or money attached except the accordance with the order of a designated court under subsection 3 or subsection 5 of the section 15 section of section 15. Subsection 5 में बोलता है कि notwithstanding anything contained in subsection 4, the competent authority may, if think fit, it expedient order the immediate sale of the perishable item or assets under the proceeding of the sales shall be utilized in the same manner as may be provided for the other property. Subsection 5 सिंपल सा बोलता है कि अगर पेरिशेबल कोई एसेट्स आपके पास है तो आप उसको सेल आउट कर सकते हो जैसे कि अदर एसेट्स को सेल आउट कर सकते हो. सेक्शन 14 क्या है कि अपन ने प्रोविजनली अटैच किया अभी प्रॉपर्टी को, अब प्रोविजनली अटैच को अपन को एब्सोल्यूट बनाना है तो अपन को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी डेजिग्नेटेड कोर्ट के अंदर. तो सेक्शन 14 बोलता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेशन देगी विद इन द 30 डेज के अंदर. इस 30 डेज को 60 डेज तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन रीजन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट file an application with the such particular as may be prescribed before the designated court for making the provisional attachment absolute and for a permission to sell the property so attached by the public auction or if the necessary by private sale. Subsection 2 ये बोलता है कि in case where the money or property has been the attached on the permission granted by the designated court in another state or union territory, the application for confirmation of such attachment shall be filed that court. Confirmation of attachment by the designated court. तो अब सेक्शन 15 के अंदर डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है अब यहाँ पे एप्लीकेशन उसको रिसीव हो चुकी है सेक्शन 14 से, तो अब वो नोटिस इश्यू कर रहा है डिपॉजिट टेकर को और एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड अंडर सेक्शन 40. अब डिपॉजिट टेकर और एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड उनको शो कॉज देना पड़ेगा विद इन द 30 डेज के अंदर जब ये नोटिस इश्यू किया गया, और उनको बताना पड़ेगा कि why the order of attachment should not be made absolute and the property so attached to be sold. Subsection 2 बोलता है कि designated court shall also issue a notice to all other person represented to its as a saving or being likely to claim any interest or title in the property to appear on the same date as persons refer to in subsection 1 to raise the objections if they so desire to attachment of the property. नोटिस भेजने के बाद अब डेजिग्नेटेड कोर्ट अपना फाइनल जो डिसीजन है सुना रहा है, तो तीन तरह से डिसीजन सुना सकता है. फर्स्ट जो है फेवर में हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, सेकंड जो है वेरी करता हो पार्शियली हो, और थर्ड जो होता है पूरा नेगेटिव हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो ए जो बोल रहा है वो बोल रहा है मेकिंग द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट एब्सोल्यूट. बी जो है वो वेरिंग इट बाय द रिलीजिंग अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम अटैचमेंट. सी बोल रहा है कैंसलिंग द प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट. एंड इन केस ऑफ द ऑर्डर अंडर क्लोज ए और बी, मतलब आप एब्सोल्यूट कर दिया फर्स्ट वाले में और सेकंड में पार्शियली एब्सोल्यूट कर दिया, तो आप डायरेक्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सेल द प्रॉपर्टी सो अटैच्ड बाय द पब्लिक ऑक्शन
or if necessary by the private sale and realize the sales proceeds. सबसेक्शन 4 जो है वो ये बोलता है कि डेजिग्नेटेड कोड शेल नॉट इन वेरिंग और कैंसिलिंग, मतलब जो बी और सी उसने ऑर्डर निकाला था वो ओनली 2 कंडीशंस पे निकाल सकता है अगर एक फुलफिल होती है तो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि डिपॉजिट टेकर और द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 हैज अ इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, और दूसरी कंडीशन ये है देयर शेल रिमेन एन अमाउंट और प्रॉपर्टी सफिशिएंट फॉर द रीपेमेंट टू द डिपॉजिटर्स ऑफ सच डिपॉजिट टेकर। फिफ्थ सबसेक्शन बोलता है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट शेल पास सच ऑर्डर और इशू सच डायरेक्शन में बी नेसेसरी फॉर द equitable distribution among the depositors of the money attached or the realized out of the sales. Subsection 3 बोलता है कि designated court shall the adverse or to complete the proceeding under this section within the period of 180 days from the date of receipt of the application. Attachment of the property of the melified transfer. Section 60. Section 60 subsection 1 बोलता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी इस एक्ट के आने से पहले और वो 2019 में एप्लीकेबल हो गया। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थी और मुझे पता था कि मैं जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट जो है स्कीम में चला रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, जैसे ये एक्ट आया और मैंने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पर्सन को। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 50 लाख रुपीस, पर मैंने उसको ट्रांसफर कर दी 1 लाख रुपीस के अंदर, ताकि जब मैं पकड़े में आऊं तो मेरे से प्रॉपर्टी से रिकवर होगा, प्रोविजनली मेरी प्रॉपर्टी जो है अटैच होगी, वो नहीं हो। तो ये सेक्शन बना सेक्शन 16(1). इसके अंदर बोला जाता है कि वेयर द डेजिग्नेटेड कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ रीजनेबल कॉज फॉर बिलीविंग दैट द डिपॉजिट टेकर हैज अ ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी अदरवाइज इन द गुड फेथ or not for a commensurate consideration. It may by a notice require any transfer of a such property, whether or not he received the property directly from the said deposit taker, to appear on the date to be specified in the notice, and the show was by so much of the transferee property has is equivalent to the proper value of the property transferred should be attached. तो मैंने जिसको ट्रांसफर करी थी उसको बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि मैं उसकी प्रॉपर वैल्यू को क्यों अटैच नहीं किया गया। सबसेक्शन 2 अगर उसको ट्रांसफरी को बुलाया गया अगर वो नहीं आता, where the said transferee does not appear and the show was on the specified date, or where the designated court is satisfied that the transfer of the property to the said transferee was not bona fide transfer and not for commensurate consideration, it shall order the attachment of so much of the said transferee property has in its opinion is equivalent to the proper value of the property transferred. Payment in lieu of attachment. Any deposit taker or person referred in subsection 1 of section 15 or the transferee referred to in section 16, दोनों में नोटिस भेजे गए थे। इसमें 16 में नोटिस भेजा गया था ट्रांसफरी को, और 15 के अंदर जो डेजिग्नेटेड कोर्ट था वो डिपॉजिट टेकर को यहाँ पे भेज रहा था नोटिस। नोटिस की बात यहाँ पे बोली कि एनी टेकर और पर्सन रेफर टू subsection 1 of section 15 or transferee referred to in section 16 whose property is about to be attached or has been provisionally attached under this act may at any time before the confirmation of attachment apply to a designated court for a permission to deposit the fair value of the property in a lieu attachment. तो absolute confirmation से पहले आ जाएगा और उसको डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास और परमिशन मांगेगा कि आप मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दे दीजिए और उसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट है, उसकी फेयर वैल्यू का जो अमाउंट है वो मेरे से ले लीजिए। सबसेक्शन 2 बोलता है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट में ऑर्डर सच डिपॉजिट टेकर और पर्सन और ट्रांसफरी टू पे एनी सम टुवर्ड द कॉस्ट एज मे बी एप्लीकेबल। और सेक्शन 18 में पावर दी गई है डेजिग्नेटेड कोर्ट की। द डेजिग्नेटेड कोर्ट शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर, नेमली द पावर टू अप्रूव द स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ द डिपॉजिट टेकर ड्यू फ्रॉम द वेरियस डेटर, power to assess the value of assets of the deposit taker and finalize the list of the depositors and their respective dues, power to direct the competent authority to take possession of any assets belonging to or in the control of the deposit taker and to sell, transfer and realize the attached assets either by the public auction or by the private sale as it the deemed fit depending upon the nature of the assets and credit the sales proceeding thereof to its paying account. सेक्शन 19 बोलता है कि डेजिग्नेटेड कोर्ट ने जो फाइनल डिसीजन सुनाया उससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है
तो वो हाई कोर्ट में जा सकती है. तो एनी पर्सन इंक्लूडिंग द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ द एग्रीड बाय द फाइनल ऑर्डर ऑफ द डेजिग्नेटेड कोर्ट अंडर दिस चैप्टर may appeal to high court within the 60 days from the date of such order. 60 days को और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन sufficient cause होगा तो provided that the high court may be entertain the appeal after the expiry of the said period of 60 days. It is if it is satisfied that the appellant was prevented by the sufficient cause from the preferring the appeal in the time. Power of Supreme Court to a transfer cases. Section 20 बोलता है कि सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि डिपॉजिट में डिफॉल्ट है या फिर सेक्शन ये डिपॉजिट स्कीम जो है सेक्शन 30 से है, सेक्शन 30 अपन आगे पढ़ेंगे अभी, तो सेक्शन 30 से रिलेट करता है तो उसको ट्रांसफर कर सकता है दूसरे डेजिग्नेट कोर्ट में. तो whenever it is made to be appear to Supreme Court that there is a default in any deposit scheme or deposit scheme of the nature refers to in section 30, the Supreme Court may by an order direct that any particular case be transferred from one designated court to another court. Subsection 2 बोलता है कि Supreme Court may act under this section only on an application filed by the competent authority or any interested party. तो ये दोनों एप्लीकेशन लगाएगी, उसको बोलेगी कि हमें चेंज करना है, तो the Supreme or every such application shall be supported by the affidavit. Subsection 3 बोलता है कि जो एप्लीकेशन आई है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है सुप्रीम कोर्ट, उसको लगता है कि फेक एप्लीकेशन है तो पेनल्टी भी लगा सकता है. तो थर्ड बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज of opinion that the application was spurious and the vexatious ordered the applicant to pay by way of the compensation to pay any person who opposed the application such sum not exceeding 50,000 rupees as it may be considered appropriate in the circumstances of the case. Thank you so much. Now is Vijay take over. Good afternoon, everyone. So far, we have discussed the meaning and the objective of BUDS Act 2019 and the meaning of deposits, competitive authority, designated court, and other relevant provisions. Now, Section 21 discusses about the punishment for contravention of Section 3. Section 3 में हमने देखा था कि जो भी unregulated deposit schemes है, these are banned under BUDS Act 2019. तो इसके अंदर सबसेक्शन सेक्शन 21 को 3 सबसेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, सबकी अलग अलग पेनल्टीज और पनिशमेंट्स है. फर्स्ट सबसेक्शन बोलता है कि एनी डिपॉजिट टेकर हु सोलिसिट डिपॉजिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3. यहाँ पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं किया गया बल्कि डिपॉजिट को सोलिसिट किया गया है पब्लिक से, यानी मांगा गया है. तो इस केस में पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू 5 years. यानी कि उसको मिनिमम 1 साल से लेकर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है with fine which shall not be less than 2 lakh rupees but which may extend to 10 lakh rupees. Now subsection 2 discusses any deposit taker who accept deposit in contravention of section 3. यहाँ पे डिपॉजिट टेकर के द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया जाता है पब्लिक से, तो here the punishment will be imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may be extended to 7 years. With fine which shall not be less than rupees 3 lakh but which may extend to 10 lakh rupees. And thereafter subsection 3, यहाँ पे any deposit taker who accept deposits in contravention of section 3 and fraudulently defaults in repayment of such deposits or in rendering any specified service. मतलब यहाँ पे डिपॉजिट टेकर डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करता है और उसको रीपेमेंट करने में फ्रॉडुलेंटली ऑफेंस करता है, तो यहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट और पेनल्टी है वो ज़्यादा होगी. Imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years. With fine which shall not be less than 5 lakh rupees but which may extend to twice the amount of aggregate funds collected from the subscribers, members or participants. यानी कि फाइन होगी मिनिमम 5 लाख रुपए से लेकर के twice the amount collected from the members or public. एंड जितना इन्होंने लिया है उसके डबल तक फाइन जा सकती है. Thereafter section 22 punishment for contravention of section 4. सेक्शन 4 ये डिस्कस करता है कि अगर कोई डिपॉजिट स्कीम रेगुलेटेड है, यानी कि अपने 9 रेगुलेटर्स के पास रजिस्टर्ड है, बट फिर भी वो पेमेंट के अंदर कोई फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 22
22 के अंदर दी गई है कि any deposit taker who contravenes the provisions of section 4 and fraudulent default in regulated deposit schemes, तो punishment रहेगी imprisonment for a term which may extend to 7 years. यहाँ पे imprisonment 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, इसका minimum कुछ भी नहीं है, और फाइन हो सकती है which shall not be less than 5 lakh rupees, but which may extend to 25 crore rupees or 3 times the amount of profits made out of the fraudulent default, whichever is higher, or with both. मतलब यहाँ पे फाइन होगी मिनिमम 5 लाख रुपीज से मैक्सिमम जा सकती है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट्स मेड और विद बोथ. आगे अपन एक केस देखते हैं. अपन ने जो भी सेक्शन देखे पेनल्टीज के, इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कि एबीएन कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग टू पार्टनर्स मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. The business model of the firm is to receive deposits from public and to invest them in other profitable projects. It claims a return of 15% on deposits received, which is higher than provided by the banks. The firm is not registered with any of the deposit regulators in India. Whether it is an offence under the BUDS Act 2019. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि ये पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस जो है वो पब्लिक से पैसा लेना और दूसरे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और प्लस ये किसी भी रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड नहीं है. तो ये क्या ये ऑफेंस होगा, अगर होगा तो किस सेक्शन के अंदर होगा? So all participants and coordinators, please take care of answering yes or no. रोहित मित्तल, उर्मी जंवर, आरुषि मित्तल, मैथी. Yeah, Rohit Mittal says yes. Anyone else? So Saloni also yes. So continue. Yes, Avantika also yes. Ronak yes. Jayesh says no. So Jayesh, would you please explain that what is the reasons for no? So you can continue in between. Jayesh, you can explain your reason in the chat box. Let's continue. Solution is yes, it's an offense under subsection 2 of section 21. यहाँ पे पेमेंट को रीपेमेंट, यहाँ जो डिपॉजिट इन्होंने लिए हैं उनको रीपेमेंट में तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया गया है, बट इन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं जो कि बेंड है अंडर बर्ड्स एक्ट 2019. और इसके लिए जो पनिशमेंट रहेगी, द पनिशमेंट एंड पेनल्टी एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 आर एज फॉलोज. इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मिनिमम 2 ईयर टू 7 ईयर्स तक की, और फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज. आगे चलते हैं. केस सेकंड. Sundar Finance Limited is an NBFC registered in India. In year 2015, it introduces a deposit scheme named Samriddhi, offering a return of 10% annually on the deposits. For 5 years, it performs well and shows good returns. Due to its rapid growth, in 6th year, it receives a deposit of rupees 100 crore from all over country, from which it earns a profit of rupees 10 crore. But it does not provide any return to the depositors for 3 years. Later investigation found an intentional fraud committed on behalf of the entity. Advise any legal consequences under BUDS Act 2019. Yeah, participants. I think it's a lengthy question, but still you can take up, please. Yes, because sir. answering this on chat box may actually take time. Yes, sir. The above case is punishable under section 22 of the BUDS Act 2019. Because यहाँ पे हम देखेंगे तो सुंदर फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई. इसी ने एक डिपॉजिट स्कीम लॉन्च करी है समृद्धि नाम की. इन्होंने क्या किया है कि 5 साल तक डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, और 6th ईयर में जब इनके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उसको
उसके बाद इन्होंने कोई रिटर्न दिया ही नहीं है, which is why it is punishable under section 22, which is fraudulent default in the regulated deposit scheme. And the punishment and penalty as per section 22 are as follows: imprisonment for a term which may extend to 7 years, and fine which shall not be less than rupees 5 lakh but which may extend to rupees 30 crore, which is higher of 45 crore, and 3 times of the profits made. यहाँ पे इन्होंने 10 करोड़ का प्रॉफिट मेड किया था, इसका 3 टाइम्स यानी 30 करोड़, मैक्सिमम 30 करोड़ की पेनल्टी जा सकती है. तो लेट्स कंटिन्यू. सेक्शन 23, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5. सेक्शन 5 अपना बोलता है कि कोई भी रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट करता है पब्लिक को डिपॉजिट के लिए, तो वो भी यहाँ पे बैन है. Any deposit taker who contravenes the provisions of section 5, which is wrongful inducement in relation to unregulated deposit schemes, तो यहाँ पे imprisonment रहती है for time which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years, and fine which may extend to 10 lakh rupees. सेक्शन 24, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स. यहाँ पे रिपीट ऑफेंडर्स यानी कि इन्होंने पहले भी इसी सेक्शन के अंदर ऐसा रिलेवेंट कोई क्राइम इन्होंने किया हो, एंड देयर आफ्टर रिपीट ऑफेंडर इन्होंने फिर से वही ऑफेंस किया हो. Whoever having been previously convicted of an offence punishable under this chapter, except the offence under section 26, is subsequently convicted of an offence shall be punishable with. यहाँ पे जो पनिशमेंट और पेनल्टी रहेगी वो थोड़ी ज्यादा रहेगी. इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not less than 5 years but which may extend to 10 years, and fine which shall not be less than 10 lakh rupees but which may extend to 50 crore rupees. There are section 25, offences by deposit takers other than individuals. Where an offence under this act has been committed by a deposit taker other than an individual, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the deposit taker for the conduct of its business, as well as the deposit taker shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be processed against and punished accordingly. जहाँ पर इंडिविजुअल को छोड़ करके पार्टनरशिप कंपनीज या फिर अदर एंटिटीज के अंदर जो भी एट द टाइम द ऑफेंस वाज कमिटेड, मैनेजमेंट के लिए जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे वो भी इसके अंदर गिल्टी पाए जाएंगे. इसका एक प्रोविजन नीचे दिया गया है कि नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1 shall render any such person liable to any punishment provided in this act if he proves that the offence was committed without his knowledge or he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. अगर वो ये दो बात प्रूव कर देता है कि उसकी नॉलेज के बिना ये ऑफेंस हुआ है या फिर उसने अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस दिखाया है इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो गिल्टी नहीं है. अदरवाइज ही विल बी guilty under subsection 25. Thereafter section 26, punishment for contravention of section 10. सेक्शन 10 अपना बोलता है कि अगर कोई भी डिपॉजिट टेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको इंटीमेट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो whoever fails to give the information required under section 10 or fails to furnish any such statement, information or particulars as required shall be punishable with fine which may extend to rupees 5 lakh rupees. There is section 27 which says cognizance of offences. Notwithstanding anything contained in section 4, no designated court shall take cognizance of an offence punishable under that section except upon the complaint made by the regulator. ये कहता है कि कोई भी डेजिग्नेटेड कोर्ट हमने देखा कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक डेजिग्नेटेड कोर्ट बनाएगी जो कि स्पेशली बर्ड्स एक्ट के अंदर जो ऑफेंस है उन्हीं को देखेंगे, तो वो कोई कॉग्निजेंस नहीं देगा अदर देन मेड बाय द रेगुलेटर, provided that the provisions of section 4 and this section not apply in relation to a deposit taker which is a company. Thereafter comes the section investigation, search and seizures. Section 28, offences to be cognizable and non-bailable. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, every offence punishable under this act except the offence under section 22 and 26 shall be cognizable and non-bailable. ये सेक्शन बोलता है कि बट्स 29 के अंदर जो भी ऑफेंस हुआ है ये कॉग्निजेबल होगा एंड नॉन बेलेबल होगा. विच मीन्स कॉग्निजेबल का मीनिंग होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास अगर सच वारंट नहीं है फिर भी वो सच कर सकता है, एंड नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं मिलती. सेक्शन 29, competent authority to be informed of offences. The police officer shall, on recording information about the commission of an offence under this act, inform the same to the competent authority. यानी पुलिस ऑफिसर को जैसे ही इसके बारे में इंफॉर्म होता है उसको इंफॉर्म करना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को. सेक्शन 30, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. On receipt of information under section 29 or otherwise,
if the competent authority has reason to believe that the offence relates to a deposit scheme in which the depositors, deposit takers, or properties involved are located in more than one state or union territory in India or outside India, and the total value of the amount involved is of such magnitude as to significantly affect the public interest, the competent authority shall refer the matter to the central government for investigation by CBI. यहाँ पे अगर competent authority को ये लगता है कि deposit takers या depositors या उनकी properties more than one state, union territory या outside India भी है, सेकंड उन्हें ये लगता है कि जो अमाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है वो इस बहुत ज़्यादा अमाउंट का है जो कि सिग्निफिकेंटली पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो वो मैटर को रेफर कर सकता है, फिर वो रेफर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दिया जाए। Thereafter, Section 31, power to enter search and siege without warrant. ये सेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर को इस बारे में पता लगता है कि कोई ऑफेंस किया जा रहा है रिलेटिंग टू बर्ड्स एक्ट 2019, तो वो किस प्रोसेस को फॉलो करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अंदर सब सेक्शन फर्स्ट है कि whenever any police officer not below the rank of an officer in charge of a police station has reason to believe that anything necessary for the purpose of an investigation into any offence under this act may be found in any place within the limits of the police station of which he is in charge, such officer may, with the written authorization of an officer not below the rank of SP, Superintendent of Police, and after recording in writing authorize any officer subordinate to him. ये सेक्शन ये बोल रहा है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को ये पता लगता है तो वो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होना वो या फिर उसके ऊपर की पोस्ट का हो सकता है, जब उसे पता लगता है कि ऐसा कोई ऑफेंस किया जा रहा है तो सबसे पहले वो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से राइटिंग में ऑथराइजेशन लेगा और उसी के बाद आगे एक्शन लेगा। इसमें आगे है कि सबसेक्शन 8 टू एंटर एंड सर्च एनी बिल्डिंग कन्वेंस और प्लेस बिटवीन सनराइज एंड सनसेट व्हिच ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर सच पर्पसेस। अगर उसे लगता है कि कोई ऐसा बिल्डिंग कन्वेंस या कोई भी प्लेस है जहाँ पे ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है तो वो सनराइज से सनसेट के बीच में वहाँ पे सर्च कर सकता है। Subsection B, in case of resistance to break open any door and remove any obstacle to such entry for exercising the powers conferred by Clause A. Subsection C, to seize any record of property found as a result of the search in the said building, conveyance or place. अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जो है उसको सीज करने की जरूरत है तो वो कर सकता है। To detain and search if he thinks proper, take into custody and produce before any designated court any such person whom he has reason to believe to have committed any offence punishable under this act. अगर कोई बात है उसको लगता है कि किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में लेने की जरूरत है तो उसे रख सकता है, डिटेन कर सकता है, बस डेजिग्नेटेड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर सकता है। आगे आते हैं सबसेक्शन 2 है इसी का, where it is not practicable to seize the record the property, the officer authorized under subsection 1 may make an order in writing to freeze such property, account, deposits or valuable securities maintained by the deposit taker, and it shall be binding on the concerned bank or financial or market establishment to comply with the said order. अगर उसे लगता है कि ये सीज करना इसको प्रैक्टिकेबल नहीं है तो वो इसे फ्रीज कर सकता है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी, अकाउंट या डिपॉजिट्स जो भी है उनको फ्रीज कर सकता है और ये बाइंडिंग होगा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मार्केट सिक्योरिटी मार्केट जो उनके लिए भी, provided that no bank or financial or market establishment shall freeze such account, deposit or valuable securities for a period beyond 30 days unless the same is authorized by the order of the designated court. अगर डेजिग्नेटेड कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 30 दिन से ज्यादा तक इसे फ्रीज नहीं रख सकते। Thereafter, subsection 3, where an officer takes down any information in writing or records grounds for his beliefs or makes an order in writing under subsection 1 or subsection 2, he shall within a time of 72 hours send a copy thereof to the designated court in a sealed envelope and the owner or the occupier of the building conveys or place. जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी राइटिंग में रीजन वगैरह रिकॉर्ड करेगा क्यों उसने सर्च किया तो ये उसको डेजिग्नेटेड कोर्ट को प्लस जो प्रॉपर्टी का ओनर है उनको देना पड़ेगा। Thereafter, section 33, publication of advertisement of unregulated deposit scheme. Where any newspaper or other publication of any nature contains any statement, information or advertisement promoting, soliciting deposits for or inducing any person to become a member of any unregulated deposit scheme, the appropriate government may direct such newspaper or publication to publish a full and fair retraction free of cost in the manner in the same position in such newspaper or publication as may be prescribed. जब किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के बारे में न्यूज़पेपर में कोई
एडवर्टीजमेंट या कुछ भी दिया जाता है सोलिसिट करने के लिए फंड्स को, और बाद में वो अगर इसके अंदर ऑफेंस में पकड़ा जाता है तो उस न्यूज़पेपर को क्या करना पड़ेगा, एक फुल एंड फेयर रिट्रैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश करना पड़ेगा। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इसके रिगार्डिंग अदर रूल्स भी बना सकती है। सेक्शन 37 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। The central government may by notification make rules for carrying out the provisions of this act on the following matters. Section 37 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है रिगार्डिंग द फॉलोइंग मैटर्स की वो इनके रिगार्डिंग जो भी है रूल्स बना सकती है, जिनमें है सबसे सबसेक्शन ए है द इंफॉर्मेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर इशूइंग एन ऑर्डर एंड द मैनर ऑफ अटैचमेंट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 7। हमने सेक्शन 7 के अंदर देखा था कि जब भी कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है तो वो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि जिस उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उन्हें पता लगा कि यहाँ पे ऐसा क्राइम किया जा रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो भी रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन बी द इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 के अंदर हमने देखा था कि जो भी रेगुलेटरीज है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल डेटाबेस है उसको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, इसके रिगार्डिंग रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। The form and manner in which and time within which the information shall be given under subsection 10 of section 10 subsection first of section 10, यानी जब भी डिपॉजिट लेकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको इन्फॉर्म इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसके रिगार्डिंग जो भी फॉर्म एंड मैनर या जो भी टाइम है इसके रिगार्डिंग रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। The particulars contained in the application to be filed by the competent authority before the designated court under subsection first of section 14। सेक्शन 14 क्या बोलता है कि जब किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जाता है और जब उसको एब्सोल्यूट करना हो तो कंपिटेंट अथॉरिटी एप्लीकेशन फाइल करती है डेजिग्नेटेड कोर्ट को, तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो जो पर्टिकुलर्स आपको फाइल करने होंगे इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। The procedure to be adopted by the designated court before issuing an order under subsection 3 of section 15। डेजिग्नेटेड कोर्ट के पास पावर होती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो पूरी प्रॉपर्टी को प्रोविजनल से एब्सोल्यूट अटैचमेंट कर सकता है या फिर कुछ प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है या फिर कैंसिल भी कर सकता है। तो ये करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके रिगार्डिंग रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। रूल्स अंडर सब सेक्शन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 31। सेक्शन 31 हमने अभी देखा जो सर्च एंड सीजर का था पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इसके रिगार्डिंग रूल्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। द मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट अंडर सेक्शन 33। सेक्शन 33 में हमने देखा कि न्यूज़पेपर एक फुल एंड फेयर रिट्रैक्शन देंगे अपनी उन्होंने जो भी पहले पब्लिश किया हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। इन एनी अदर मैटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनली प्रेस्क्राइब्ड। Thereafter, section 38 which states the power of state government etc. to make rules। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे हो उनके पास भी कुछ पावर दी गई है कि वो कुछ मैटर्स के रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। कि द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट as the case may be in consultation with the central government by notification make rules to carry out the provisions of this act on the following matters। A है sealing for self-help groups under clause J of subsection 4 of section 2। हमने जब डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर पढ़ी थी तो उसके अंदर डिपॉजिट के डेफिनेशन में एक क्लॉज था जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पेमेंट करते हैं अपने ग्रुप के अंदर उसकी एक सीलिंग लिमिट होती है, जो वो लिमिट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है कि कितनी वो लिमिट रहेगी। पर्पज एंड सीलिंग अंडर क्लॉज के और सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 2। वही अपने क्लॉज के अंदर पढ़ा था कि कुछ पर्टिकुलर पर्पज और उनकी सीलिंग लिमिट भी इनको भी डिपॉजिट की डेफिनेशन का एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके इसमें कौन कौन सी डिपॉजिट्स को इंक्लूड करना है किसको नहीं करना है ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सी द मैनर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सबसेक्शन 3 सेक्शन 7। सेक्शन 3 के सबसेक्शन 3 में हमने देखा कि जब भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पता रखता है या फिर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है तो प्रोविजनली अटैच कर लेता है प्रॉपर्टी को डिपॉजिटेटर्स की। तो वो जो मैनर रहेगा प्रोविजन अटैचमेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाएगी। दी अदर मैटर्स अंडर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन जे। The rules relating to impounding and custody of records under subsection 8 of section 7। जब भी कोई उन्हें रिकॉर्ड्स या कुछ भी प्रॉपर्टी जो भी वहाँ से अवेलेबल होती वहाँ मिलती है उनको इम्पाउंड एंड कस्टडी की रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाने हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। एंड एनी अदर मैटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी ओरिजिनली प्रेस्क्राइब्ड। अमेंडमेंट्स टू सर्टेन इलेक्ट रूल्स। जब बर्थ एक्ट 2019 को अप्लाई किया गया इम्प्लीमेंट किया गया तो उसके साथ ही कुछ एक्ट्स के अंदर
अमेंडमेंट किए गए, उनकी डेफिनेशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, जिनमें फर्स्ट है अमेंडमेंट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 in section 45 first in clause B after explanation second the following explanation shall be inserted namely। उसमें एक नई explanation को ऐड किया गया है, explanation 3 the amounts accepted by a cooperative society from the members or shareholders by whatever name called but excluding the amounts received as share capital shall be deemed to be deposits for the purpose of this clause। एंड ये बोलता है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर से शेयर कैपिटल के अलावा जो भी अमाउंट्स रिसीव करती है वो डिपॉजिट मानी जाएगी इफ सच मेंबर और शेयर होल्डर आर नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर्स by whatever name called who do not have full voting rights in the meeting of such cooperative society। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मेनली दो टाइप के मेंबर्स हो गए, एक जिनके पास वोटिंग राइट्स है और अदर जो हो गए जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जो कि नॉमिनल या एसोसिएट मेंबर्स हो सकते हैं। अगर ऐसे मेंबर अदर देन देयर शेयर कैपिटल कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को तो वो भी डिपॉजिट माना जाएगा। Thereafter amendments to the Securities and Exchange Board of India 1992 से भी 1992 एक्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट किया गया है कि इन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 इसमें इन सेक्शन 11 इन सबसेक्शन 4 क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। तो वहाँ पे एक नया क्लॉज ऐड हुआ है, सब सब्स्टिट्यूट किया गया है। अटैच फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 days बैंक अकाउंट और अदर प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटरमीडियरी or any person associated with the securities market in any manner involved in violation of any of the provisions of this act or the rules or regulations made therein। यानी जब सेबी को लगता है कि यहाँ पे कोई इस टाइप का ऑफेंस किया जा रहा है तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है डिपॉजिट टेकर की उसको अटैच कर लेती है, तो वो मैक्सिमम 90 days तक ही अटैच कर पाएगी, ऐसा इसके अंदर कहा है। लेकिन नीचे इसका प्रोविजन दिया गया है कि प्रोवाइडेड द बोर्ड शेल, यहाँ पे बोर्ड सेबी को बोला जा रहा है, the board shall within 90 days of the said attachment obtain confirmation of the said attachment from the special court established under section 26A having jurisdiction and on such confirmation such attachment shall continue during the pendency of the aforesaid proceedings and on conclusion of the said proceedings the provision of section 28 apply। नीचे प्रोविजन में ये बात कही गई है कि अगर सेबी स्पेशल कोर्ट के अप्रूवल ले लेती है तो उसके बाद वो 90 डेज की लिमिट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा और जब तक कि इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। नीचे प्रोवाइडेड फर्दर दैट ओनली प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट और अकाउंट्स और एनी ट्रांजैक्शंस entered therein so far as it relates to the proceedings actually involved in violation of any of the provisions of this act or rules or the regulations made thereunder shall be allowed to be attached। ये कहा गया है कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जाएगा, केवल वही प्रॉपर्टी जो इस ऑफेंस से रिलेटेड है केवल उसी को अटैच किया जाएगा और बाकी को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट टू द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। इसमें क्या अमेंड किया गया है कि इन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2022 इन सेक्शन 67 सब सेक्शन फर्स्ट इसमें दो है कि आफ्टर द वर्ड्स रिसीव डिपॉजिट्स द वर्ड्स फ्रॉम इट्स वोटिंग मेंबर शेल बी इंसर्टेड। इसमें ये जो इंसर्शन हुआ है रिसीव डिपॉजिट्स के बाद में फ्रॉम इट्स वोटिंग मेंबर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। Will the following explanation shall be inserted namely for the removal of doubt it is hereby clarified that a multi-state cooperative society shall not be entitled to receive deposits from persons other than voting members। यानी कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने वोटिंग मेंबर्स के अलावा कहीं से भी फंड्स रिसीव नहीं कर सकती, अगर वो करती है तो वो डिपॉजिट माने जाएंगे। Thanks to everyone. This is all from our side. So, all speakers, you have really done wonderful job. In fact, after the keynote address of Nikhilesh ji, who has actually summarized the entire act, as well as he has informed a lot of new things which probably we may not be aware of about implementation of this act and other things. So you have rightly covered all the aspects of this act. So important over here is that any of the violation of this particular act may drag our client into some problem where even the CBI as well as the various other investigation authorities may come into picture. So of course,
At present, the act is not enabled so far as act is applicable as of today. And in Rajasthan, as said, that in August 2022, such act has come into force. Of course, the enabling or machinery provisions of the act are yet to be implemented by the state government. But we as a auditor or as a consultant should take care of whether there are any such deposits or not. And if so, then at least an examination from the point of view of applicability of this act, or whether is there any contravention of this provision of this act is there or not. So that should be basically brought to the notice of the seniors and CAs and partners if it is there in any of the particular client's case. So that is the purpose of this particular uh, scheme for our discussion. So with this, I request for uh, question answer session. Sorry, the quiz to be started by the speakers, and coordinators are requested to please see that everybody has joined in the quiz and they are answering to almost all questions. So it is duty of coordinators. They have to send me a separate file in this regard. So thank you all.